A very good morning to all you students. Once again, we are coming to introduce a new topic of class 12th accountancy. As you know very well, in the last few videos we discussed the second last chapter of part B, that is the accounting ratio. In this chapter, we have a lots of ratio. As you know very well, there are basically four types of the accounting ratio. That is a profitability ratio, activity ratio, or turnover ratio, liquidity ratio, and solvency ratio. So, you know very well, in the last few videos, we discussed at least three types of the ratio, that is activity ratio, solvency ratio, and the very important is liquidity ratio. और उससे रिलेटेड हम लोगों ने न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी डिस्कस कर ली. आज के इस पूरे वीडियोस में टुडे वी डिस्कस द रिमेनिंग रेशियो व्हिच वी हैव टू डिस्कस, दैट इज अ profitability ratio. Under the profitability ratio, there are very basically five types of the ratio. That is a gross profit ratio, net profit ratio, operating ratio, operating profit ratio, and return on capital employed. और इन सारे ratios में हम लोगों ने एटलीस्ट चार ratios के फॉर्मूलों को स्टडी कर लिया है. दैट इज अ ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो कैसे निकाला जाता है, नेट प्रॉफिट रेशियो कैसे निकाला जाता है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो कैसे निकाला जाता है, ऑपरेटिंग रेशियो कैसे निकाला जाता है, ये हमें सीखना बाकी है. और एक फॉर्मूला बच गया, दैट इज रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड. सो फर्स्टली हम लोग उस फॉर्मूले को देख लेते हैं. इन दिस वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल वी रिवाइज कि कौन कौन से फॉर्मूले हम लोग डिस्कस कर लिए हैं. बेसिकली वी आर डिस्कसिंग द फोर्थ रेशियो, द लास्ट रेशियो, दैट इज अ profitability ratio. Under the profitability ratio, we discussed four ratios, that is gross profit ratio. The number one is gross profit ratio. What is the formula of gross profit ratio? That is a gross profit divided by revenue from operation into 100, and this ratio expressed in percentage. The second types of the ratio which are discussed in this chapter, that is net profit ratio. What is the formula of net profit ratio? That is a net profit divided by revenue from operation into 100, and this ratio is also in percentage. The third ratio which we have to discuss, that is operating profit ratio. So what is the formula of operating profit ratio? The formula is operating profit divided by revenue from operation into 100, and this formula is also given in percentage. The fourth ratio which we have to discuss, that is operating ratio. What is the operating ratio? Operating ratio means that is cost of revenue from operation plus operating expense divided by revenue from operation into 100, and this ratio also expressed in percentage. So हम लोगों ने लास्ट वीडियोस में ये चारों फॉर्मूलास को डिस्कस किया है कि व्हाट इज हाउ वी कैलकुलेट द ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेटेड बाय द sales minus cost of revenue from operation, that is a revenue from operation minus cost of goods sold. Number two is what is revenue from operation. Here revenue from operation means sales minus sales return, and it is very important कि सर ये बताइए कि सर ग्रॉस प्रॉफिट का और कोई फॉर्मूला. यस, ग्रॉस प्रॉफिट का एक और फॉर्मूला, दैट इज ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक. ओके. Second formula is net profit. Net profit calculated by the two way. The first one is by the help of gross profit, and number two by the help of ग्रॉस प्रॉफिट से जब हम लोग नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं, so the formula is gross profit minus indirect expense plus indirect income. रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन वही सेम, सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न. ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करते हैं? ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है दो तरह से कैलकुलेट की होती है, ग्रॉस प्रॉफिट की हेल्प से और नेट प्रॉफिट की हेल्प से. नेट प्रॉफिट का एक ही तरीका है, ग्रॉस प्रॉफिट माइनस इनडायरेक्ट एक्सपेंस प्लस इनडायरेक्ट इनकम. बट ग्रॉस ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालने के दो तरीके हैं. फर्स्ट, आप ग्रॉस प्रॉफिट से ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकाल सकते हो, नेट प्रॉफिट से ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकाल सकते हो. ठीक. ग्रॉस प्रॉफिट से कैसे निकलेगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट? ऑपरेटिंग प्रॉफिट इक्वल्स टू ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंस प्लस ऑपरेटिंग इनकम. और नेट प्रॉफिट से कैसे निकलेगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट? ऑपरेटिंग प्रॉफिट इक्वल्स टू नेट प्रॉफिट
plus non-operating expense minus non-operating income. And you know very well, cost of revenue from operation, it is very clear, that is opening stock plus purchase plus direct expense minus closing stock. It is a formula of cost of revenue from operation, और जब revenue from operation में से cost of revenue from operation minus कर देते हैं तो क्या निकल के आ जाता है, that is a gross profit. And operating expense, all the expenses which are related to the business activity. It means all the expenses which are related to the operating activity of the business, यानी वो सारे खर्चे जो business की operating activity से related होते हैं. जैसे कि for example, if we are talking about the expenses regarding the operating activity, like interest paid, dividend paid, it is related to the financing activity. It is not a operating activity. सो ऑपरेटिंग एक्सपेंस का भी कुछ फॉर्मूला है जो हम लोगों ने ऑलरेडी क्लास 11 में प्रॉपरली डिस्कस किया हुआ है. ओके, सो लेट्स वी मूव टू द few questions related to the gross profit ratio, net profit ratio, operating profit ratio and operating ratio. So let's we move to the question. The question out is on your screen, that is calculate gross profit ratio, net profit ratio, operating profit ratio and operating ratio from the given information. And the information are revenue from operation 2,60,000, sales return is 10,000, gross profit 1 lakh, administrative expenses 18,000, selling and distribution expense, that is 12,000, interest on debenture 10,000, loss by fire 12,500, income from investment 2,500. So question is asking to calculate the gross profit ratio, net profit ratio, operating ratio and on operating profit ratio. You know very well what is the formula of gross profit. The formula of gross profit is gross profit divided by revenue from operation into 100. And you know very well, जब भी हम revenue from operation निकालते हैं तो it is the meaning of revenue from operation is sales minus sales return. So sales is 2,60,000, sales return is 10,000. So sales में से sales return minus होगा तो कितना आ जाएगा, 2,50,000. Gross profit already given in the question, gross profit is 1 lakh. So 1 lakh divided by 2,50,000 into 100, so answer will be 40%. Now the second form ratio is net profit ratio. So what is net profit ratio? According to the net profit ratio, you know very well, the formula of net profit ratio is net profit divided by revenue from operation into 100. Okay, so basically in this situation, firstly we have to calculate the net profit. What is the formula of net profit? The formula of net profit is net profit equals to gross profit minus indirect expense plus indirect income, whether it is operating or non-operating. Indirect expense or indirect income का मतलब होता है all types of the expenses, whether it is operating or non-operating. So gross profit में अगर आप देखो, so what is the amount of the gross profit? That is 1 lakh. Indirect expense कितना है? Indirect expense मतलब all the expenses, whether it is operating or non-operating. All the expenses means administrative, selling, distribution, interest on debenture, loss by fire, all the types of expense. Means 18,000 plus 12,000 plus 10,000 plus 12,500, all types of the expense. Plus indirect income, and indirect income is income from investment. What is the amount of income from investment? That is 2,500, so it will be added. Indirect expense और indirect income का मतलब होता है all types of the incomes and expense, whether it is operating or non-operating. हर तरह की income और expense को हम इसमें include करते हैं. So gross profit is 1 lakh. Total indirect expense is 52,500 and expense income is 2,500. So your net profit is 50,000. So net profit calculate हो गया, आप formula पे value put कर दो, that is 50,000 divided by 2,50,000 into 100. So the formula percentage is 50,000 of NPR. NPR means the net profit ratio from this question. It is very easy for you. आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है सारे क्वेश्चंस में.
आप देखो तो हमने क्या किया, नेट प्रॉफिट निकाला। नेट प्रॉफिट की वैल्यू, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना है, ऑलरेडी इसमें आ चुका है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हमेशा क्या होता है, नेट होता है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब क्या होता है, दैट इज all the situation, that is sales minus sales return, and sales is 2,60,000, return is 10,000, so revenue from operation is 2,50,000. Okay, so let's we move to the third ratio. The third ratio is operating profit ratio. ऑपरेटिंग, पहले हम लोग ऑपरेटिंग रेशियो निकाल लेते हैं। ऑपरेटिंग, चलो देखिए कोई बात नहीं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। So what is the formula of operating profit ratio? The formula of operating profit ratio will be operating profit divided by revenue from operation into 100। अब यहां पर आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। ऑपरेटिंग प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है दो तरीके से। ऑपरेटिंग प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है ग्रॉस प्रॉफिट से नेट प्रॉफिट। तो यहाँ इजी पड़ेगा आपको ग्रॉस प्रॉफिट से, क्योंकि ग्रॉस प्रॉफिट भी दी है, नेट प्रॉफिट भी दी है। तो अब डिसीजन आपके ऊपर है कि आप कौन सा फॉर्मूला अडॉप्ट करना चाहते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट वाला कि नेट प्रॉफिट वाला। इट इज टोटली डिपेंड ऑन यू। सो ग्रॉस प्रॉफिट वाला फॉर्मूला क्या है, ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंस प्लस ऑपरेटिंग इनकम। अब आपको एक्सपेंस में क्लासिफाई करना पड़ेगा कि कौन सा ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, कौन सा नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। ग्रॉस प्रॉफिट तो ऑलरेडी आपको पता है, ग्रॉस प्रॉफिट कितनी है आपकी, 1,00,000 रुपए। सो ऑपरेटिंग एक्सपेंस आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। ऑपरेटिंग एक्सपेंस कैसे कैलकुलेट होगा, ऑपरेटिंग एक्सपेंस मतलब ऑल द एक्सपेंस विच आर रिलेटेड टू द ऑपरेटिंग एक्टिविटी ऑफ द बिजनेस, दैट इज एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस एंड सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, ये किस तरह का खर्चा है, इट इज अ फाइनेंसिंग एक्टिविटी, ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी का खर्चा है। और लॉस बाई थेफ्ट, इट इज एन अदर एक्सपेंस, उसको हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी नहीं मानते, क्योंकि लॉस बाई फायर हो गया, फायर आने से आपके यहाँ लॉस हो गया, तो ये इमरजेंसी लॉसेज है। ये लॉसेस आपके बेसिकली, अगर इन सारे लॉसेस के बारे में बात करें तो ये सारे लॉसेस आपको जो लॉस बाई फायर हुआ है, ये लॉस बाई फायर आपके बेसिकली अगर इस बारे में बात किया जाए तो इट इज नॉट रिलेटेड टू द ऑपरेटिंग एक्टिविटी ऑफ द बिजनेस, बल्कि आप सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑपरेटिंग एक्टिविटी से रिलेटेड, एडमिनिस्ट्रेशन ऑपरेटिंग से रिलेटेड है। इंटरेस्ट और डिबेंचर जो आप पे करो ये ऑपरेटिंग से रिलेटेड नहीं है। ओके, सो ग्रॉस प्रॉफिट में से ऑपरेटिंग एक्सपेंसिव कौन कौन सा होगा, एक होगा 18,000 एडमिनिस्ट्रेशन और 12,000 सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। और इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, इट इज नॉट ऑन ऑपरेटिंग इनकम, ये ऑपरेटिंग इनकम नहीं है, ये नॉन ऑपरेटिंग इनकम है। तो अगर हम बात करें इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर एंड लॉस बाय फायर, ये नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है और ये आपका नॉन ऑपरेटिंग इनकम है। सो आपको ज्यादा इन सब पे ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। तो उसको सॉल्व करिए तो आ जाएगा आपका 1,00,000 माइनस 30,000, दैट इज 70,000। अब फॉर्मूला पे वैल्यू पुट कर दो, दैट इज 70,000, दैट इज ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइडेड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज 2,50,000 इंटू 100। इसको सॉल्व कर लेना, आ जाएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। अब लास्ट में आपका कौन सा रेशियो बच गया, ऑपरेटिंग रेशियो। ऑपरेटिंग रेशियो थोड़ा सा अलग होता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो से। वो क्या होता है वो हम आपको समझाते हैं, उसके लिए मुझे स्पेस की जरूरत पड़ेगी, सो हम ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो को रफ कर रहे हैं। सो फोर्थ रेशियो इज operating ratio. So what is the formula of operating ratio? Operating ratio equals to cost of revenue from operation minus plus operating expense divided by revenue from operation into 100। तो उसमें आपको फर्स्ट ऑफ ऑल कैलकुलेट क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। एंड कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस क्रॉस प्रॉफिट, जो दोनों दी हुई है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन तो आपने क्लियर कर लिया है, दैट इज 2,50,000, और ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो ऑलरेडी दी हुई है, दैट इज 1,00,000। सो आपका कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है 1,50,000। सो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आ गया 1,50,000। ऑपरेटिंग एक्सपेंस आपने ऑलरेडी निकाल के रखा हुआ है कि सिर्फ दो ही एक्सपेंस क्या है, ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, 18,000 एंड 12,000। सो ऑपरेटिंग एक्सपेंस आपके कितने हो गए, 18,000, दैट इज एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस, 12,000 इज सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस, टोटल विल बी 130,000। सो अगर हम ये बात करें कि ऑपरेटिंग एक्सपेंस 30,000 और कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज 1,50,000,
So your operating ratio will be operating ratio equals to cost of revenue from operation, that is 1,50,000. Operating expense 130,000. Revenue from operation is 2,50,000 equals to 180 divided by 250 into 100. अब इन दोनों को आप कैलकुलेट करो कितना परसेंटेज आ रहा है, दोनों को आप प्रॉपरली कैलकुलेट करो कि आपका कितना परसेंटेज आ रहा है ऑपरेटिंग रेशियो का और ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो का। मैंने आपको एक चीज बताई थी, वो ये इंफॉर्मेशन मैंने आपको शेयर की थी कि अगर आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो कैलकुलेट करते हैं और ऑपरेटिंग रेशियो निकालते हैं तो दोनों का जो टोटल है वो 100 आता है। सो अगर हम इन दोनों का टोटल करें तो हमारे पास कितना आ रहा है, इसको हम लोग फाइंड आउट करते हैं, सॉल्व करते हैं। दैट इज वैल्यू इज 1,80,000 divided by 2,50,000 into 100, that is 72%। इसका आंसर आया 72%। एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो कितना आया, 70,000 divided by 2,50,000 into 100, that is 28%। सो मैंने आपको एकदम क्लियरली बताया था कि ऑपरेटिंग रेशियो एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो ये दोनों जो इन दोनों का जो टोटल आता है वो हमेशा 100 आता है। इसीलिए अगर आपसे कभी क्वेश्चन में पूछे इफ ऑपरेटिंग रेशियो इज 72%, so what is the ratio of operating profit, that is 28%, 100 minus operating ratio, yani it's short we can say that operating ratio plus operating profit ratio equals to 100, operating ratio plus operating profit ratio equals to 100। बेसिकली क्लियर हुआ। तो इस तरह के अगर क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं तो यू हैव सॉल्व द प्रॉपर्ली, सो यू कैन सी दैट फर्स्ट ऑफ ऑल वी टेक द क्वेश्चन, बिग क्वेश्चन, बहुत सारी इंफॉर्मेशन थी, उन सारी इंफॉर्मेशन से वन बाय वन वी कैलकुलेट द ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का आंसर आया 40%, नेट प्रॉफिट रेशियो का आंसर आया 50%, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला आया 28% एंड ऑपरेटिंग रेशियो का फॉर्मूला आया दैट इज 72%। ओके, सो now let's we move to the next ratio, the ratio, the fourth ratio of profitability ratio, that is return on capital employed. So let's we move in. The next ratio is return on capital employed. It is a fourth ratio of profitability and it is the last fifth ratio. It is the last ratio of profitability. Profitability का ये last ratio है basically अगर हम बात करें तो। ओके, सो प्रॉफिटेबिलिटी का फिफ्थ रेशियो है दैट इज रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। ओके, सो इस रेशियो पे हम लोग डिस्कशन करते हैं। पहले तो इस रेशियो के बारे में कुछ स्टडी कर लेते हैं। दिस रेशियो एस्टैब्लिश द रिलेशनशिप बिटवीन, दिस रेशियो एस्टैब्लिश द रिलेशनशिप बिटवीन, this ratio establish the relationship between, किन दो फैक्टर्स के बीच में रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करता है, ये जो रेशियो है ये दोनों आपका बेसिकली कुछ स्पेसिफिक फैक्टर्स पे ये रिलेशन एस्टेब्लिश करता है, दैट इज टोटल कैपिटल एंड नेट प्रॉफिट, टोटल कैपिटल एंड नेट प्रॉफिट ऑफ द फर्म, ऑफ फर्म। सो बेसिकली जो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है ये दो चीजों पे बेसिकली रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करता है, हमारी टोटल कैपिटल पे और नेट प्रॉफिट पे। अब बेसिकली ये हमारा बात उठता है सर कि क्या इस रेशियोज को हम और किसी नाम से भी जानते हैं? यस, समटाइम्स इन द एग्जामिनेशन इस रेशियोज को किसी और नाम से भी एग्जामिनर देता है। ऐसा नहीं है कि यही रेशियो देगा, देगा कैलकुलेट द रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, इसका बहुत सारे नेम्स हैं। द अदर नेम ऑफ दिस रेशियो इज
rate of return, okay, rate of return or return on investment, return on investment, okay, return on investment और yield on capital. इस रेशियोज को हम लोग इस रेशियोज के नाम से भी जानते हैं, यानी रिटर्न ऑन कैपिटल is also return on capital amount is also known as the return on rate of return, return on investment and yield on capital. And this ratio expresses the relationship between the total capital and net profit of the company of the any firm. So let's we take the formula. Sir, what is the formula of return on investment, return of capital? So इसको हम लोग ROI से short form में relate कर रहे हैं. The ROI equals to net profit and which types of net profit? Net profit before interest and tax. Before interest and tax divided by capital employed into 100. ये भी बात याद रखना है, into 100, and this ratio gives in percentage. यानी कैसे आरओआई निकालना है? नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100 एंड दिस विल बी एक्सप्रेस्ड इन परसेंटेज. पॉइंट नंबर 1. अब क्लियर है सर, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स कैसे कैलकुलेट होगा? ये टॉपिक हम लोगों ने ऑलरेडी बहुत अच्छे से डिस्कस किया है. किसमें? इंटरेस्ट कवरेज रेशियो में. अगर आप इंटरेस्ट कवरेज रेशियो उठाओगे ना, तो उसमें हम लोगों ने प्रॉपरली बहुत अच्छे ढंग से इन सारी चीजों को स्टडी किया है. हाउ वी कैलकुलेट द नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100. ओके, सो नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स कैसे निकलता है, ये मैंने प्रॉपरली आपको बताया हुआ है. रही बात कैपिटल एम्प्लॉयड, तो कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के दो तरीके. There are basically two ways by which you can easily calculate the capital employed. The first method is, which are also known as the liability approach. यानी कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के दो अप्रोचेस हैं. First one is the liability approach, and the formula of capital employed is equity share capital plus preference share capital plus reserve and surplus and it is very important thing, reserve and surplus plus long term loan minus fictitious assets ठीक, minus non operating assets कोई ऐसा एसेट जो भी ऑपरेटिंग कंडीशन में नहीं है, ऐसी इतना डिटेल में आता नहीं है, ठीक है. नॉन ऑपरेटिंग एसेट्स माइनस एक्युमुलेटेड लॉसेस. ये तो बेसिकली वही बात हो गई कि आपको और बहुत डिटेल में कॉन्सेप्ट को स्टडी करा लिया गया कि what is the formula of capital employed. So we have to calculate the capital employed by two way, that is assets approach and liability approach. So liability approach का formula होता है equity share capital plus preference share capital plus reserve and surplus plus long term loans minus fictitious assets minus non operating assets minus accumulated loss. The second method by you can easily calculate the value of capital employed, that is assets approach. The second one is a assets approach. So assets approach में क्या है? Basically assets approach का formula होता है, that is fixed assets plus current assets minus current liability. और इसको एक और वे में भी हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं. यू नो वेरी वेल, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी इक्वल्स टू वर्किंग कैपिटल. सो हम लोग ये भी बोल सकते हैं. फिक्स एसेट्स को हम लोग क्या बोलते हैं? नॉन
करंट एसेट्स माइनस वर्किंग कैपिटल। स्टैंडर्ड वर्ड में करंट एसेट्स माइनस वर्क करंट लायबिलिटी, ये दोनों का मतलब क्या होता है? करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी इक्वल्स टू वर्किंग कैपिटल एंड फिक्स्ड एसेट्स इज आल्सो नोन एज द नॉन करंट एसेट्स। सो दिस इज द formula of return on capital employed. Please note down in your copy properly. Okay, so I hope it is clear for you. Let's we move to the questions. ये आपके सामने इंफॉर्मेशन है, इस इंफॉर्मेशन से आपको क्या करना है? सॉरी, इट इज अ इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द फॉर्मूला ऑफ रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, हाउ वी कैलकुलेट द आरओआई, एंड आरओआई कैलकुलेटेड इन परसेंटेज, and net profit before interest and tax, it is calculated, you know very well how it will be calculated by the shareholders, by the company. And capital employed is calculated by the two way, either it is calculated by the liability side, either it is calculated by the asset side. So there are basically two approaches by which we easily calculate the value of capital employed, that is the liability approach and assets approach. Okay, I hope it is clear for you. Now let's we move to the question. So the question is calculate return on capital employed from the following information. Okay, so informations हम लोग पहले देख लेते हैं, उसके हिसाब से हम लोग रफ करेंगे. Okay, so information are calculate ROI, okay, and the information are equity share capital 2,50,000, equity share capital 2,50,000, preference share capital 1 lakh, 9% preference share capital 9 lakh, and reserve and surplus 1,50,000, reserve and surplus 1,50,000, 8% long term loan, 8% long term loan 1,50,000, and current liability 50,000. इंफॉर्मेशन खत्म नहीं, इंफॉर्मेशन खत्म नहीं, अभी और सारी इंफॉर्मेशन दी है. दैट इज प्लांट एंड मशीनरी 5 लाख, प्लांट एंड मशीनरी 5 लाख आपको कंफ्यूज करने के लिए दी हुआ है. गुडविल 50,000, और ये मैंने क्वेश्चन इसलिए भी चूज किया है ताकि मैं इस क्वेश्चन को दोनों मेथड से सॉल्व कर सकूं. गुडविल एंड करंट एसेट्स 1,50,000, एंड इंटरेस्ट नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स. ये राहत की खबर है. नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स नहीं दिया, बिफोर दिया, दैट इज 78,000. सो एक चीज तो आपका क्लियर हो गया इस क्वेश्चन में कि आपको नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ी. इट इज ऑलरेडी गिवन, दैट इज 78,000. क्वेश्चन इज कैपिटल एम्प्लॉयड. अब कैपिटल एम्प्लॉयड आपको दोनों तरह से कैलकुलेट, लायबिलिटी अप्रोच और एसेट्स अप्रोच, इसमें हम दोनों तरह से कैलकुलेट करेंगे. आप देखो, मैं फटाफट कर देता हूं. लायबिलिटी अप्रोच का फॉर्मूला क्या? इक्विटी शेयर कैपिटल. इक्विटी शेयर कैपिटल की वैल्यू कितनी है? 2,50,000. प्रेफरेंस शेयर कैपिटल वैल्यू कितनी है? 9 लाख. रिजर्व एंड सरप्लस, यस, 1,50,000. ओके. लॉन्ग टर्म लोन्स, यस, 1,50,000. फिक्स्ड ईसीएस एसेट्स नहीं है. नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस नहीं है. एक्यूमुलेटेड लॉसेस नहीं है. इसको सॉल्व कर दोगे आ जाएगा आपका 250, 154, 13, 14,50,000. It is clear for you? Sorry, it is 1 lakh, not a 9 lakh. It is a blunder mistake. Preference share capital is 1 lakh. Okay, so 1 lakh. Now 250, 150 is 4, 5, 6,50,000 is a capital employed. लायबिलिटी अप्रोच से आया 6,50,000 कैपिटल एम्प्लॉयड. अब एसेट्स अप्रोच से देखते हैं. एसेट्स अप्रोच में देखो, फिक्स एसेट्स प्लस करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, यही फॉर्मूला हम लोग लगा लेते हैं. यस सर. फिक्स एसेट्स में क्या क्या आता है? प्लांट एंड मशीनरी एंड गुडविल, क्योंकि इट इज टेंजिबल फिक्स एसेट, इट इज एन इंटेंजिबल फिक्स एसेट.
तो आ गया आपका 5,50,000. Yes sir. Current assets will be a 1,50,000. Current liability will be a 50,000. So it is 6,50,000. You can see that चाहे हम लाइबिलिटी अप्रोच से कैलकुलेट करें चाहे एसेट अप्रोच से कैलकुलेट करें, आपका कैपिटल एम्प्लॉयड सेम आता है. अब फॉर्मूला को पुट कर दो. फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला पे वैल्यू पुट कर दो. नेट प्रॉफिट बिफोर इनकम टैक्स 78,000 डिवाइड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड 6,50,000. किसी भी मेथड से कैलकुलेट कर लो, आंसर सेम आने वाला है. दैट इज 78,000 डिवाइड बाय 6,50,000 into 100. दैट इज a 12%. So your rate of return on in capital employed is 12, and your question will be solved. So in today's video you can see that today we completed the second last chapter of the part B, that is a accounting ratio. It is very important for you. It is very important. Please listen carefully. This chapter is very important for you. So please solve all the practical problem given in the book as well as in the side book. So I hope today we cleared all the topics very easily. Thank you. Thanks a lot and take care.